Hello students, welcome to our APS classes, and as all we know that this is our foundation course especially for the students from 9 to 12. And in our today's lecture we will continue, that is chapter number 1 from the chemistry part, and this chapter is for class 9th and the name of the chapter is matter in our surrounding, and this chapter is from the chemistry part. And regarding this chapter today we will discuss important 19 questions, that is MCQ questions or objective questions from this chapter, and this is our term 1 examination syllabus that is to be held in November 2021, and this syllabus is common for all the boards, either state board or the CBSE board. So let us start with our chapter, that is matter in our surrounding. तो बेटे matter, anything that occupies space is known as matter. कोई भी चीज जो जगह घेरती है that is known as matter, such as chair, table, book, pen. All these things occupy space, so they fall under the category of the matter. Matter has 3 states of matter. Matter has 3 states such as solid, liquid and gases. Solids has definite shape and definite volume, whereas liquid has definite volume but not definite shape, and gases, they have neither definite shape nor definite volume. And the particles or the molecules, in case of solids, they are tightly packed, so there is more force of attraction between the solid particles, whereas in case of liquid the particles are not tightly packed and there is less force of attraction as compared to the solids. But in case of gases, their particles are not very closely packed, so there is less force of attraction as compared to the solid or the liquids. And the kinetic energy of the particles is maximum in the gaseous state, that is maximum in the gaseous state, and it is minimum in the solid state. And the standard room temperature, that is 25 degree Celsius or 298 Kelvin. This is the standard room temperature, that is known as 25 degrees Celsius or 298 Kelvin. And that is, the cooling is caused during the evaporation, but it is not caused during the boiling. So here this is the brief introduction regarding the chapter, that is matter in our surrounding. ये थोड़ा सा हमारा एक brief introduction था इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि मैटर इन अवर सराउंडिंग है. अब इस चैप्टर से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट 19 एमसीक्यू क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बेटे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग phenomena would increase on raising the temperature. That means there are different phenomena, and out of these phenomena you have to choose which phenomena would increase or raising the temperature. Options are diffusion, second one evaporation, compression of gases. Second is evaporation, compression of gases, solubility. Third one is evaporation, diffusion, expansion of gases, and the last one is evaporation, solubility, diffusion, and the last is compression of gases. So which of the following phenomena would increases or raising the temperature? That means there are 4 phenomena that has to be given regarding this question. तो जो फिनोमेना बेटा इंक्रीज करता है ऑन रेजिंग द टेम्परेचर, दैट इज अ डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस. दैट इज नॉट अ फिनोमेना दैट वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर. इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस एंड solubility, this is not increases on raising the temperature, but evaporation, diffusion and expansion of gases, this is the phenomena that would increase on raising the temperature, and the phenomena is evaporation, diffusion as well as expansion of gases. This would increase on raising the temperature. So this is the right answer. Now shift to the question number 2.
question number 2 is Seema visited a natural gas compressing unit and found that the gases can be liquefied under specific conditions of temperature. The specific conditions are temperature and pressure. That means these are the specific conditions that are temperature and pressure. While sharing her experience with friends, she got confused. Help her to identify the correct set of the conditions. So here question is, Seema visited a natural gas compressing unit and found that the gas can be liquefied under the specific conditions. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो रेज किया गया है बेटे कि सीमा जो है दैट इज विजिटेड टू अ नेचुरल गैस कंप्रेसिव यूनिट एंड there she found that the gases can be liquefied under specific conditions, and that specific conditions are temperature and pressure, and under these specific conditions that are the temperature and the pressure, here the gas can be liquefied. But when she's sharing her experiences with her friends, that at that time she got confused, and help her to identify the correct conditions. So here beta you have to identify the correct conditions to help the Seema, and options are low temperature, low pressure. Second condition is high temperature, low pressure. Third condition is low temperature, high pressure, and the last condition is high temperature and high pressure. So what are the correct set of the conditions? So you have to identify the correct set of the conditions, and there are the four set of the conditions: low temperature, low pressure, high temperature, low pressure. या तो low temperature या low pressure पर जो गैस है that can be liquefied, या फिर high temperature या low pressure पर जो है जो गैस है that can be liquefied. क्योंकि दो कंडीशन स्पेशली दी गई हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड दीज कंडीशंस द गैस कैन बी लिक्विफाइड. अदर थर्ड कंडीशन इज लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, एंड द लास्ट कंडीशन इज हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. सो यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट सेट ऑफ द कंडीशंस. तो बेटे अगर सीमा जो है वो विजिट कर रही है नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट में and found that the gas can be liquefied under the conditions of temperature and pressure, but while when she's sharing her experiences with her friends, she got confused. So you have to help the Seema to identify the correct set of the conditions. तो जिन conditions पर बेटे हम gases को liquefied कर सकते हैं और वो set of condition जो है वो है temperature और प्रेशर का, तो बेटे उस कंडीशंस में हम गैसेस को जो है लिक्विफाइड कर सकते हैं जब हमारी कंडीशंस जो होंगी वो क्या होंगी, लो टेम्परेचर की कंडीशन होगी नंबर 1, एंड सेकंड कंडीशन जो होगी दैट इज हाई प्रेशर. That means there are two set of the conditions where the gases can be liquefied, and that conditions are low temperature and the second one is the high pressure. Under these two conditions the gases can be liquefied. So this is the right answer for the question number 2. Next is your question number 3, and your question number 3 is the property of flow is unique to fluids. The property of flow is unique to fluids. Which one of the following statements is correct? That means the property of flow is unique to the fluids. That means flow करने की जो property है that is unique to the fluids. So you have to choose which one of the following statements is correct. Options are only gases behave like fluids. Second one is gases and solids, both gases and solids behave like fluids. या तो सिर्फ gases जो है वो behave करती हैं as a fluids. Second one, both gases and solids they behave like a fluid because the property of flow is unique to the property of the fluid. Third one is gases and liquids.
they behave like fluids. And the last one is only liquids are fluids. So which property of the flow is unique to fluids? Either only gases behave like fluids, second is gases and solids both behave like fluids, third one is gases and solids, not solids but liquids, gases and liquids behave like fluids, and the last one is only liquids can behave like fluids. So you have to choose the right answer, क्योंकि अभी आपको कहा गया कि जो प्रॉपर्टी है फ्लो करने की दैट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, उसके बाद आपको जो है एक यूनिक सेट जो है वो चूज करना है कि इनमें से कौन सा सेट जो है वो सही है रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज फ्लूइडिटी. तो इसमें जो है ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि गैसेस जो होती हैं they not behave like the fluids, gases and solids behave like fluids. ठीक है, अकेली गैसेस और सॉलिड्स जो होते हैं वो बिहेव नहीं करती हैं फ्लूइड्स को, सिर्फ गैसेस ही बिहेव नहीं करती हैं फ्लूइड्स को, बट गैसेस एज वेल एज लिक्विड्स, बट गैसेस एंड लिक्विड्स, गैसेस एंड लिक्विड्स. पर जब गैसेस और लिक्विड्स आपस में मिल जाते हैं तो गैसेस और लिक्विड्स होते हैं इनमें जो है एक यूनिक प्रॉपर्टी है किस चीज की, फ्लूइड की. दे हैव द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड. दैट मींस गैसेस एंड लिक्विड्स बोथ हैव द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड. सो दिस इज द राइट आंसर. Next is your question number 4, and your question number 4 is during summer water kept in an earthen pot becomes cool because of the phenomenon of. गर्मियों में आपने कई बार देखा होगा कि जब हम मिट्टी के घड़े में पानी भरते हैं तो पानी जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो ठंडा होता है. That is that phenomenon is due to either the property of the diffusion, second one is transpiration, third one is osmosis, and the fourth one is evaporation. During summer, the earthen pot, in an earthen pot, water kept on cooling. So this property is due to the phenomenon of either diffusion, transpiration, osmosis, and evaporation. तो इंट्रोडक्शन जब मैंने दी थी तो उसमें भी थोड़ा सा डिस्कस किया था मैंने कि इवेपोरेशन दैट इज कूलिंग इज कॉज्ड ड्यू टू इवेपोरेशन बट इट डज नॉट कॉजेज ड्यू टू बॉइलिंग. तो उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि इवेपोरेशन जो है दैट इज कॉज्ड ड्यू टू कूलिंग. So during summer, water kept in an earthen pot becomes cool because not of the phenomenon of diffusion. This is the wrong statement. Diffusion की वजह से जो earthen pot है उसमें water जो था वो cool नहीं होता है. Transpiration के केस में भी जो है वो wrong statement है क्योंकि इसमें भी जो है water जो होता है that is not caused cooling. And osmosis is the process where the concentration of the molecule is from lower level to the higher level. But in case of evaporation, that is water kept in an earthen pot becomes cool due to the property of the evaporation. That is due to the property of evaporation. That is evaporation. That means water kept in an earthen pot becomes cool because of the phenomenon of evaporation. So this is the correct answer for the question number 4. Next is your question number 5, and your question number 5 is a few substances are arranged in the increasing order of forces of attraction. Increasing order of forces of attraction, and these forces of attraction that is between their particles. Which of the following represents a correct arrangement?
Options are water, air, wind. Water, air, wind. Second one is air, sugar, oil. Third one is oxygen, water and sugar. And the last one is salt, juice and air. And it is the question number 5. A few substances are arranged in the increasing order of forces of attraction between the particles. So which one of the following represents a correct arrangement? Options are water, air and wind. Second one is air, sugar and oil. Third one is oxygen, water and sugar. And the fourth one is salt, juice and air. And it is your question number 5. तो बेटे इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी या करेक्ट अरेंजमेंट है that is water, air and wind, it is not the correct arrangement. Air, sugar, oil, it is not again the correct arrangement, but oxygen after water and sugar. This is the correct arrangement. Correct arrangement, that is oxygen, water and sugar. So this is the correct arrangement when a few substances are arranged in the increasing order, especially the forces of attraction between the particles. So here the following out of these following arrangements, the correct arrangement is the oxygen, water and sugar. This is the correct arrangement. So this is the right answer for the question number 5. Next, shift to the question number 6, and your question number 6 is on converting 25 degrees Celsius, 38 degrees Celsius and 66 degrees Celsius to Kelvin scale. To Kelvin scale on converting 25 degrees Celsius, 38 degrees Celsius and 66 degrees Celsius to Kelvin scale. The correct sequence of the temperature will be. That means when you have to convert 25 degrees Celsius, 38 degrees Celsius, 66 degrees Celsius to Kelvin scale. At that time, the correct sequence of the temperature will be. Options are 298 Kelvin, 300 Kelvin and 339 Kelvin. Second option is 298 Kelvin, 300 Kelvin and 338 Kelvin. Last is 273 Kelvin, 278 Kelvin and 543 Kelvin. And last option is 298 Kelvin, 310 Kelvin and 338 Kelvin on converting 25 degree Celsius, 38 degrees Celsius and 66 degrees Celsius to Kelvin scale. That is to Kelvin scale. So what is the correct sequence of the Kelvin temperature? So what is the correct sequence of the temperature? 298 Kelvin, 311 Kelvin and 339 Kelvin. अगर हम convert करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस को 38 डिग्री सेल्सियस को या फिर 66 डिग्री सेल्सियस को स्पेशली किस चीज में केल्विन स्केल में अगर कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारे करेक्ट सीक्वेंस होगा टेम्परेचर का दैट विल बी क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा बेटे हमारा टेम्परेचर का दैट इज 298 केल्विन आफ्टर 311 केल्विन and after 300 Kelvin that is 339 Kelvin. 339 Kelvin. So this is the correct sequence of the temperature while converting 25 degrees Celsius, 38 degrees Celsius and 66 degrees Celsius to Kelvin scale. After that the correct sequence of the temperature will be 298 Kelvin, 311 Kelvin and the last one is 339 Kelvin. This is the correct sequence of the temperature. So this is the right answer for the question number 6.
Next is your question number 7. Choose the correct statement from the following. There are following options that you have to be given and you have to choose the correct statement from the following options. Your first option is conversion of solid into vapor without passing through the liquid state is called vaporization. Second option is conversion of vapor into solid without passing through the liquid state is called sublimation. Third one is conversion of vapor into solid without passing through the liquid is called freezing. And the last one is conversion of solid into liquid is called as sublimation. So it is your question number 7. तो इसमें से बच्चे आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है फाइंड आउट करनी है. या तो हम सॉलिड्स को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड इनटू द वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड, दैट इज नोन एज वेपोराइजेशन. या तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. या फिर अगर हम कन्वर्ट करते हैं वेपर्स को सॉलिड्स में विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, विदाउट हम लिक्विड स्टेट में पास किए बिना अगर हम कन्वर्ट करते हैं वेपर्स को सॉलिड्स में, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. या फिर हम कन्वर्शन ऑफ वेपर्स इनटू द सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग. एंड द लास्ट वन इज या तो हम कन्वर्ट करते हैं सॉलिड्स को किस चीज में, लिक्विड्स में. अगर हम कन्वर्ट या कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड इनटू द लिक्विड, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. So out of these 4 options, which is the correct statement? तो बेटे इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट आपकी रहेगी जिसमें कि हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो है अगर हम कन्वर्ट करते हैं वेपर्स को, कन्वर्शन ऑफ वेपर्स इनटू द सॉलिड स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. दैट प्रोसेस इज नोन एज sublimation. So here the correct sequence of the statement is conversion of the vapors into the solid state without passing through the liquid state, that process is known as sublimation. So this is the correct sequence or the correct statement regarding this question. क्योंकि जिसमें हम डायरेक्टली वेपर्स को कन्वर्ट करते हैं सॉलिड्स में विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज बेटा, that process is known as sublimation. That process is known as sublimation. And in the process of sublimation, that is conversion of vapors into solid without passing through liquid state, without passing through liquid state is known as sublimation. So this is the correct sequence, that is conversion of vapors into the solid state without passing through the liquid state is known as sublimation. So this is the correct sequence, that is known as correct sequence. Next is your question number 8, and your question number 8 is the boiling points of diethyl ether, acetone and N-butyl alcohol are 35 degrees Celsius, 56 degrees Celsius and 118 degrees Celsius respectively. So which one of the following correctly represents their boiling points at Kelvin scale? So there are 4 options regarding this question. Option A is 306 Kelvin, 329 Kelvin and 391 Kelvin. Second is 308 Kelvin, 329 Kelvin and 392 Kelvin. Third is 308 Kelvin, 329 Kelvin and 391 Kelvin. And the last option is 329 Kelvin, 392 Kelvin and the last is 308 Kelvin. So if the boiling points of diethyl ether, acetone and N-butyl alcohol respectively are
35 degrees Celsius, 56 degrees Celsius and 118 degree Celsius. So which one of the following correctly represents their boiling points in Kelvin scale? तो इसमें से कौन है जो कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं करेक्टली रिप्रेजेंट्स करते हैं इन केल्विन स्केल में? एंड इट इज योर क्वेश्चन नंबर 8. तो बेटे जो इनमें से करेक्टली रिप्रेजेंट्स करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स इन केल्विन स्केल्स में, दैट आर 308 Kelvin, second one is 329 Kelvin and the last one is 391 Kelvin. So this is the correct sequence of their boiling points in Kelvin scale. So this is the right answer, that is 308 Kelvin, 329 Kelvin and 391 Kelvin. This is the correct sequence of the boiling points in the Kelvin scale. So here this is the right answer for the question number 8. Now shift to the question number 9. Now shift to the question number 9, and your question number 9 is which conditions out of the following will increase the evaporation of water? तो इनमें से कौन सी ऐसी conditions है जो कि increase करती हैं evaporation of water को? Options are increase in temperature of water, second one is decrease in temperature of water, third is less exposed surface area of the water, and the last is adding common salt to water. So out of these conditions, which one of the following increase the evaporation of water? इनमें से कौन सी ऐसी conditions है जो कि evaporation of water को increase करती हैं? तो आपके पास 4 options दी गई हैं, उनमें से आपको सही condition जो है वो find out करनी है regarding the evaporation of water, जो condition जो है evaporation of water को increase करती है. तो इसमें जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर को जो है इंक्रीज करती है कंडीशन बेटे, दैट इज अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर. अगर हम वाटर के टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर के टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करें, एट दैट टाइम वी कैन से दैट दिस कंडीशन इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर. तो यही कंडीशन है जिस कंडीशन पर हम इवेपोरेशन ऑफ वाटर को इंक्रीज कर सकते हैं, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर. सो दिस इज द correct answer for the question number 9, that is increase in temperature of water. While this condition, when we increase in temperature of water, at that conditions we can easily increase the evaporation of water. Rest are the wrong options. Now shift to the question number 10, and your question number 10 is in which of the following conditions the distance between the molecules of the hydrogen gas would increase? कौन सी ऐसी conditions हैं जिन कंडीशंस पर हम क्या कर सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है हमारे हाइड्रोजन गैस के, उनको हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. ऑप्शंस हैं इंक्रीज प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेन्ड इन क्लोज्ड कंटेनर, सेकेंड इज सम हाइड्रोजन गैस टेकिंग आउट ऑफ द कंटेनर, या तो हम कुछ हाइड्रोजन गैस को कंटेनर से टेक आउट कर लेते हैं. थर्ड कंडीशन इज इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ द हाइड्रोजन गैस, and the fourth condition is adding more hydrogen gas to the container without increasing the volume of the container. Options are first and third, first and fourth, C, second and third, and the last one is second and fourth. So here in which of the following conditions, that means there are following 4 conditions. So in which of the following conditions the distance between the molecules of the hydrogen gas would increase? That means there are some special conditions where the distance between the molecules of the hydrogen gas would increase. So you have to choose that conditions where the molecules of the hydrogen gas would increase. Increase in pressure on hydrogen contained in a closed container, some hydrogen gas that is taking out of the container,
या फिर increasing the volume of the container of the hydrogen gas, and the last one is if adding more hydrogen gas to the container without increasing the volume of the container. And it is your question number 10. ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। तो बेटे जिन कंडीशंस पर हम जो हमारे मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन गैस के जिनके डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो जो कंडीशन है हमारी, वो कंडीशन हमारी है या तो हम क्या करेंगे, सम हाइड्रोजन गैस टेकिंग आउट ऑफ द कंटेनर, या तो हम कुछ हाइड्रोजन गैस को जो है कंटेनर से टेक आउट कर लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे कि जो इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ द हाइड्रोजन गैस, या फिर जिस कंटेनर में हमारी हाइड्रोजन गैस है उस कंटेनर का हम क्या करेंगे, उसके वॉल्यूम को हम इंक्रीज करेंगे। तो इन दो कंडीशंस पर जो हमारा डिस्टेंस है बिटवीन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गैस वुड बी इंक्रीज। तो इन दो कंडीशंस के ऊपर हम जो हमारे हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस है उनको हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन मैंने ये बताई आपको, या तो हम कुछ हाइड्रोजन गैस को जो है दैट इज टू बी टेकन आउट ऑफ द कंटेनर, उसमें से हम कुछ हाइड्रोजन गैस को जो है वो कंटेनर से हम टेक आउट कर लेंगे। इस कंडीशन पर हम डिस्टेंस जो है हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स का उसको हम ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर सकते हैं। और जो सेकेंड कंडीशन है हमारी दैट इज वो है इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, या तो हम जिस कंटेनर में हमारी हाइड्रोजन गैस है उस कंटेनर के वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। दैट मींस अंडर दीज टू कंडीशंस वी कैन इजीली इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस। सो हियर दिस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10. Next is your question number 11, and your question number 11 is the boiling point of water at sea level is, boiling point of water at sea level is, options are 0 degree Celsius, 273 Kelvin, 373 Kelvin and 273 degrees Celsius. तो आपको ये बताना है कि the boiling point of water at sea level is, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है हमारा एट सी लेवल पर, दैट इज आइदर 0 डिग्री सेल्सियस है, 273 केल्विन है, 373 केल्विन एंड द लास्ट वन इज 273 डिग्री सेल्सियस. सो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज द बॉइलिंग point of water, especially at sea level. At sea level is 373 Kelvin. 373 Kelvin. So this is the boiling point of water at sea level, and the boiling point of water at sea level is 373 Kelvin. So this is the right answer for the question number 11. Now shift to the question number 12, and your question number 12 is which of the following has the strongest interparticle forces at room temperature? Which of the following has the strongest interparticle forces at room temperature? Options are oxygen, water, bromine and iron, and it is your question number 12. Which of the following has the strongest interparticle forces at room temperature? तो इनमें से आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे हैं जिनके की स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरपार्टिकल फोर्सेस है स्पेशली रूम टेम्परेचर पर. ऑप्शंस दी गई हैं आपके पास, या तो ऑक्सीजन है, वाटर है, ब्रोमिन है या फिर आयरन है. दैट मींस आउट ऑफ दीज विच हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरपार्टिकल फोर्सेस स्पेशली एट द रूम टेम्परेचर. तो इनमें से जो है बेटे जिनकी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरपार्टिकल फोर्सेस है स्पेशली रूम टेम्परेचर पर, तो वो ऑक्सीजन जो है उसके भी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरपार्टिकल फोर्सेस नहीं है रूम टेम्परेचर पर, वाटर की भी नहीं है एंड ब्रोमिन की भी नहीं है जिनकी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरपार्टिकल फोर्सेस at room temperature. But iron has the strongest interparticle forces at room temperature. So this is the right answer for the question number 12, that is iron.
Next is your question number 13, and your question number 13 is which of the following conditions is most favorable for converting a gas into a liquid? इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि मोस्ट फेवरेबल हैं फॉर कन्वर्टिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड? कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके बिहाव पर हम गैसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड स्टेट में? ठीक है, ऑप्शंस हैं हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, second one is low pressure low temperature, third one is low pressure high temperature, and the last one is high pressure and high temperature. So what are the favorable conditions where we can easily liquefy or convert the gases into the liquid state? That means there are some conditions where we can easily convert the gases into the liquid state. तो जिन कंडीशंस पर बेटे हम गैसेस को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड स्टेट में, वो है आपकी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. अगर हम हाई प्रेशर जितना ज्यादा प्रेशर हाई होगा और जितना लो टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा आपका हाई प्रेशर होगा और जितना लो टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा आपका हाई प्रेशर होगा और जितना लो टेम्परेचर होगा, उन कंडीशंस पर हम इजिली गैसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड स्टेट में. दैट मींस अंडर दीज टू कंडीशंस, दैट इज हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, under these two conditions we can easily convert the gases into the liquid state. So this is the right answer, that is high pressure and low temperature. So these are the two conditions where we can easily convert the gases into the liquid state. Next is your question number 14, and your question number 14 is dry ices. Option is water in the solid state, second is water in gaseous state, third one is CO2 in liquid state, and the last one is CO2 in solid state. So ड्राई आइस इज, इसमें से ड्राई आइस क्या है? या तो वाटर को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना, या फिर वाटर को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना, एंड द लास्ट वन, या फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करें. तो वो क्या है आपका? तो इसमें से आपको बता रहे कि ड्राई आइस क्या है. तो ड्राई आइस जो है बेटे, दैट इज जिसमें कि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है, देन द कार्बन डाइऑक्साइड इट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट. कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट, दिस इज नोन एज ड्राई ice. This is known as dry ice, that is CO2 in solid state. So this is the right answer for the question number 14, that is dry ice is carbon dioxide in solid state. So here we have complete important 14 MCQ questions or objective questions from this chapter. Now इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो कुछ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही हैं जिनको हम आपके साथ आगे शेयर करेंगे. That is your question number 15 and your question number 15 not but your question number 1. ठीक है, and your question number 1 is evaporation of liquid at room temperature leads to a dash effect. जिसमें हमारी evaporation होती है liquids की at room temperature पर, that conditions leads to a dash effect. कौन से effect को वो lead करती है? तो evaporation जो है वो पहले भी कहा था मैंने इंट्रोडक्शन जब दी थी कि evaporation causes cooling, ठीक है, but not boiling. तो evaporation of a liquid at room temperature leads to the cooling effect. That leads to the cooling effect. बेटे इन सभी को आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर लें, because these questions are very important from the examination point of view. So evaporation of liquid at room temperature, जो भी evaporation होती है हमारी किस चीज की, लिक्विड्स की एट रूम टेम्परेचर पर, और वो किस कंडीशन को कॉज करती है, दैट condition or that effect leads to the cooling effect. Next is the question number 2. At room temperature, the forces of attraction between the particles of the solid substance are dash than those which exist in the gaseous state. तो रूम टेम्परेचर पर जो हमारी फोर्स या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में है?
पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड्स के बीच में ऑफ डैश देन दोज विच एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट एंड इट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। तो रूम टेम्परेचर पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी हमारी पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस के बीच में आर डैश देन दोज विच एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट, दैट मींस दैट इज स्ट्रॉन्गर, दैट इज स्ट्रॉन्गर, दैट इज स्ट्रॉन्गर। तो बेटे रूम टेम्परेचर पर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस आर स्ट्रॉन्गर देन दोज विच एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। ठीक है, तो जो हमारी रूम टेम्परेचर पर जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड, दे आर मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द particles that exist in the gaseous state. Next is your question number 3, and your question number 3 is the arrangement of particles is less order in the dash state. However, there is no order in the dash state. तो जो arrangement है हमारे particles की वो less ordered है dash state में, and however there is no order in the dash state, and it is your question number 3. The arrangement of particles is less ordered in the जो अरेंजमेंट है हमारे पार्टिकल्स की दैट इज लेस ऑर्डर्ड इन द लिक्विड स्टेट, दैट इज लेस ऑर्डर्ड इन द liquid state. The arrangement of the particles is less ordered in the liquid state. However, there is no order in the gaseous state. There is no order in the gaseous state. So here the arrangement of the particles is less ordered in the liquid state. However, there is no order in the gaseous state. So here we complete important 19 questions regarding this chapter, that is matter in our surrounding. And remember one thing, this is the syllabus for the term 1 examination that is to be held in November 2021. So once again, good night to all the students.